वालेकुम जनाब, आज हम करने जा रहे हैं माहिरा खान के मेकअप को फॉलो, जो कि उन्होंने खुद अपने फेस पर किया है। ईद ग्लैम मेकअप उनकी कोई वीडियो है जिसके ऊपर 6 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। यार कमाल मेकअप किया उन्होंने बहुत सिंपल स्टेप्स में, और आज मैं बिल्कुल उन्हीं के स्टेप्स को फॉलो करूँगी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग मेकअप करेंगे और माहिरा खान हमारे साथ रहेंगी इस वीडियो में। तो जनाब आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है और हम उनको फॉलो करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। A little bit of moisturizer on my skin. A little bit more. You can tap it, you can use an eye cream or you can just use your moisturizer on your face. Really pat it inside. भाई आप बाहर निकल रहे हो या ना हो, घर के अंदर हो या घर के बाहर हो. So this is, I am a big advocate for sunscreen. So there are different ways. लोग मुझे लगता है जिस तरह से हम अपना moisturizer लगाते हैं उसी तरह लोग अपना sunscreen भी लगाते हैं, लेकिन there is no, I don't think there's a right or wrong way, and I don't think that there is, you can ever wear more sunscreen. You can only wear less, I think. So आप लगाएं अपना sunscreen बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने अपना moisturizer लगाया है. पीछे भी गर्दन पे लगाएं और अपने गालों पे भी लगाएं, so that everything is protected. कि मेरा अपना कंसीलर है और कोई इस्तेमाल नहीं करता. सो here you go. और जैसे कि आप देख रहे हैं ख़त्म हो गया है. So he says you should do it upwards so that you lift. मैं यहाँ भी लगाऊंगी, यहाँ भी और यहाँ भी. ओके जी. Sponge, it's really soft. यूज़ करने से पहले एक टिप, आई थिंक आप सब जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर आप गीला कर लें तो it becomes moist and it doesn't hurt your skin. So here you go. Tap 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 tap. So upward. Upward is the way to go. मैं अपनी आंखों पे इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये बहुत पिंकिश है, तो ऐसा लगता है कि कुछ लगा हुआ है. So I'm sure that a lot of you would have said कि maybe I should have covered this or this. I don't personally like covering it, so I'm not going to cover it. Okay. और वैसे आज मैं बहुत कोई प्रोफेशनल होकर आपको बता रही हूँ. एक्चुअली तो मैं इसको अपने इस तरह लगाती हूँ और फिर अपने हाथ से लगाती हूँ, लेकिन now the reason why I'm putting this blush is because इसमें थोड़ी सी shine है, तो it's a bit more dressy. Actually, you can just put it. मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा डाला था. So it's that. अब वही स्पंज मैं अपनी आँखों पे भी थोड़ा सा लगा दूँगी. Yeah. So good. All blended. Okay. अच्छा जी. अब eyebrows. In fact, again मेरे अदनान भी ये कहता है, बाबरी भी ये कहता है कि आईब्रोज जब आप बनाती हैं थोड़ा सा भी फिल करती हैं तो वो एकदम से चेहरा खिल जाता है. सो हियर यू गो. सो व्हाट आई हैव बीन टोल्ड इज कि आप यहाँ से एक लाइन खींचें. हालांकि ये मैं यूजुअली नहीं करती, मैं ये करती हूँ. मैंने लाइन खींची थी. आई जस्ट फिल इट इन. हो रहा है ना काम? अच्छा. मैं यूजुअली नहीं करती.
मैं ये करती हूँ. मैंने लाइन की चुपली. Sorry. And check this out. मैं अपनी कनखियों से देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई देख रहा है और बड़ा इम्प्रेस हो रहा है. And now you can actually see, right? Contouring होती है. Don't let anybody double chin shame you, even if it's your best friend. Okay? आप उतनी contouring करें जितना आप करना चाहते हैं. So here goes. Look at this. Easy. अब just a little bit. Just a little bit. Okay. Another way. Another thing you must do is a little bit here. Again, harsh lines look bad, so here I'm just going to keep it easy. यहाँ हम भूल जाते हैं, but this is something my makeup artists do with me, and it really, I don't know, कुछ करता है. ऐसा लगता है कि वही आपका चेहरा फ्रेम हुआ है. Yeah? Okay. अब मैं अपनी नाक को कंट्रोल करूंगी. यहाँ से मोटी है तो उसको हर गेज यहाँ से नहीं कंट्रोल करिएगा, सिर्फ यहाँ से कंट्रोल करिएगा. Okay, because when you will do this, you'll do it from here. It'll look much more longer. This I realized way too late in my career. But so you take a little bit of the. Sorry, I just do it with my hand actually. These are quite dark, so I'm going to make them a little lighter, and I just do this. That's all I do. And then I take the same concealer a little bit, or actually you can use powder. एक और चीज़ है, मैं जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आई शेडोज़ ज़्यादा नहीं लगाती, लेकिन जो पाउडर ब्लश मैं लगाती हूँ उसी को मैं थोड़ा सा लेके, and this is a really good trick, and it's basic and it's really nice. So what I do is I just, इसको क्या बोलते हैं, socket बनाना है ना, make sockets or something for depth. Now I don't know if I'm doing it right, to be honest, but now what this does is the pink, or if you want to do it a little bit more, आप थोड़ा सा नीचे भी कर दें. Okay, now I'm going to attempt a liner. That's it. I just do half a liner. Literally just do half a liner. It's really... Oh, this is a different liner. And this is a different liner. So let's try to match this liner to that liner. Allah. अच्छा खैर. Okay, अब now I know how I'm going to fix this, okay? Now I'm going to use mascara. Not too much. I don't like a lot of mascara. But अब इस तरह से अपना mascara पहले just keep it under your lid and then lift it. So keep it, and then lift it. Okay. It's like a palette with everything. So sometimes I'll just put थोड़ी सी लाल, थोड़ी सी pink, mix करके. I should be putting a lip liner, but I don't usually do that, so
In fact, I don't own one. But is a lipstick जिससे मजाल है कि लिपस्टिक यहाँ लग जाए। And I know that the idea of opening a lipstick and applying it. ये earrings हैं, मैंने ये लखनऊ से ख़रीदे थे कोई 10 साल पहले और मैं अपनी दोस्त अदिति से मिलने गई थी, आई थिंक वहाँ से ख़रीदे थे। अच्छा जी, अब बालों की बारी आती है। एक तो ये कि आप बिल्कुल अपने चपटे बाल बना के और आप ये जूड़ा बना लें। Or like I'm going to do today, I am going to put some, it's like a texturizing spray, and let's see. Ugh. In fact, what you can do is put your hair down and boom. You can just, yeah. What do you think? Okay guys, this was my Eid makeup tutorial. So जनाब, this is how it looks like. आप देख लेंगे ये लुक कैसी लग रही है आप लोगों को, और हमने कोशिश की है कि एग्जैक्टली हम फॉलो कर सकें उन्हें। और अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लगी तो भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी अपनी राय का इज़हार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।